Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be starting with a new chapter, that is the bed monster's secret. So let's just begin that what is this bed monster secret? And we all know secret means कोई ऐसी चीज जो हम दूसरों को रिवील नहीं करना चाहते हैं. We share secrets with our closed ones. And monster we all know bhoot, right? Kind of a bhoot creature. So let's just begin with this chapter. Title of our chapter is The Bed Monster's Creature, or you can say The Bed Monster's Secret. So let's just read the story which explores the protagonist. What do you mean by protagonist journey? Means जो बहुत ही ज़्यादा main character है इस पूरी चैप्टर में टू फेस एंड कॉन्कर हिज फियर स्पेशली द बेड मॉन्स्टर इटसेल्फ कि कोई ऐसा भूत है जो उसके बेड पे आता है राइट. तो बेन बॉगल ही ले अवेक इन अ कोल्ड स्वेट. उसको बहुत ठंडे पसीने आते हैं. क्यों आते हैं? हाउ कुड ही स्लीप विद द मॉन्स्टर अंडर हिज बेड. उसको ऐसा लगता है कि उसके बेड के नीचे क्या है? भूत है. एवरी नाइट इट वॉज द सेम स्टोरी. हर रोज रात को ये सेम स्टोरी है. एज सून एज द बेन स्विच ऑफ द हिज बिसाइड लैम्प. बिसाइड मीन्स जो उसके पास में जो लैम्प है, व्हेनेवर ही जस्ट स्विच ऑफ राइट द मॉन्स्टर वोक विद अ स्नॉट. और मॉन्स्टर उसके सर पे आगे आ जाता है. ऑल थ्रू दी नाइट द क्रिएचर गर्गल. वो आवाजें करता है एंड ग्रोल इन द शैडोज. और शैडोज में दिखता है वो. बेन हैड नेवर डेयर टू लुक अंडर हिज बेड. उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो बेड के नीचे देख ले कि कौन है. ही वॉज टू टेरिफाइड ऑफ वॉट ही माइट सी. ही वॉज टू टेरिफाइड. वो इतना ज्यादा डरा हुआ है कि पता नहीं उसको ऐसा लग रहा है कि वो देख लेगा उसे. Perhaps the monster had been 10 eyes. Monster की 10 आंखें हैं. लॉन्ग स्लिमी टेंटिकल्स हैं. बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स हैं उसके. और ह्यूज शार्प टीथ हैं. बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े टीथ हैं. एंड ऑल ऑफ दीज. और सब कुछ है. और स्कूल में बेन कुड हार्डली कीप हिज आईज ओपन क्योंकि वो रात रात भर नहीं सो पा रहा है. वेक अप बेन बॉगल रियल हिज टीचर. His teacher is shouting, just उठ जाओ, बैठ रहे हो. This is the third time in a week that you are sleeping. You have fallen asleep in the class. Mr. Ben, Mr. Gizzle likes students to be awoken in the mathematics class. Mathematics के classes में मिस्टर ग्रिजल जो है, जो उनके सर हैं, वो क्या चाहते हैं कि बच्चे जगे रहें राइट. इवन व्हेन ही वाज एड अवेक, जब वो थोड़ा आधा अवेक था, बेन वाज होपलेस इन नंबर्स. बेन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके सर उसको क्या समझा रहे हैं. व्हेन ही फेल्ट स्लीपी इट वॉज ऑल मोर डिफिकल्ट. और जब वो सोने लगा तो ये बहुत चीजें बहुत डिफिकल्ट हो गई. गो टू द बेड अर्ली. यंग मैन ने कहा जल्दी अपने बेड पे जाया करो, जल्दी सोया करो. He said in a very stern manner. Stern means in a very strict manner. Unless Ben could get rid of the monster, जब तक वो monster से अपना पीछा नहीं छुड़वा देगा, Mr. Gizzle would be getting furious with him every day. हर रोज उससे बहुत ही ज्यादा क्या हो रहे हैं? गुस्सा हो रहे हैं. Now, tired and worried, Ben was walking home when he spotted something in a shop window. उसने एक विंडो शॉप में देखा. एक शॉप की विंडो में देखा जब वो जा रहा था. इट वॉज अ बुक कॉल्ड द बुक ऑफ मॉन्स्टर्स. मे बी वो कह रहा है कि मे बी ये जो किताब है, द बुक हैज बीन समथिंग अबाउट बेड मॉन्स्टर्स के बारे में होगी. बेन थॉट. ही डैश्ड इनसाइड. और वो अंदर हो गया राइट. एज सुन एज ही गॉट होम. जब वो घर गया, he just read the book from cover to cover. मतलब पूरा पेज टू पेज उसने पढ़ा. बट देयर वाज नो मेंशन ऑफ मॉन्स्टर्स अंडर द बेड. की बेड के नीचे कोई मॉन्स्टर नहीं होता. व्हाट अ वेस्ट ऑफ मनी ही थॉट. कितने पैसे मैंने वेस्ट कर दिए हैं. देन इन द लास्ट चैप्टर ही read about the monsters eat. की monsters क्या खाते हैं. perhaps the book called him बुक कुड हेल्प आफ्टर. मतलब ऑल सब चीजों में उसकी बुक किताब हेल्प कर रही थी. ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ मॉन्स्टर ट्रैप. एक ट्रैप बनाता हूँ जिससे मॉन्स्टर को मैं पकड़ लूंगा. ही प्लेस 2 चॉकलेट कुकीज फ्रॉम द कुकी टिन. वहां से कुकीज के टिन में से 2 कुकीज निकाली. और ऑफ कोर्स एक नेट लिया अपने डैड के बॉक्स में से. एंड इन नो टाइम ऑल दिस ट्रैप वाज रेडी. सब कुछ रेडी हो गया. दैट नाइट ही क्लाइम्ड इनटू द बेड एंड स्विच ऑफ द लाइट. और वो वेट करने लगा राइट. At first, Ben Karum was as quiet as mouse. बिल्कुल quiet था. Then he heard a crunching, munching sound followed by a whoosh and his monster का जो trap है वो काम कर गया क्योंकि उससे ये सब आवाजें सुन ली. Nervously, Ben crept over to the net के ऊपर गया. But nothing had been prepared for him. What happened next? कि कुछ भी नहीं था वहां पे. Please don't hurt me, squeaked in a tiny voice. में एक आवाज आने लगी. Please don't hurt me. The smallest monster was tangled in the net. सबसे छोटा सा मॉन्स्टर है वो कहाँ हो गया? नेट के अंदर फंस गया है. आई कांट बिलीव आई वाज स्कैर्ड ऑफ यू क्राइड बेन. मैं तुमसे इतना ज्यादा डरा हुआ था. आई नो द मॉन्स्टर रिप्लाइड सैडली. उसने कहा मुझे पता है कि तुम बहुत डरे हुए हो. आई एम टू स्मॉल टू स्केयर एनीमोर. मैं बहुत ही ज्यादा छोटा सा हूँ. आप मुझसे क्या ही डरोगे. एंड दैट इज व्हाई आई हिड अंडर योर बेड.
मैं आपके बेड के नीचे छुप जाता हूँ. I did not want you to see me, and I am the most useless monster alive, she wailed and started to sob. मतलब वो ऐसे थर-थर काँपने लगा, and he was like कि मैं सबसे ज़्यादा बेकार मॉन्स्टर हूँ, एंड आई डू नॉट वांट कि आप मुझे देखें. दैट इज़ द सोल रीज़न कि मैं आपके बेड के नीचे छुपा हुआ था. It is almost impossible to scare people when you only weigh 15 ounces. सिर्फ 15 ounce की हो, मतलब बहुत ही कम वेट के हैं. एंड शी फर्दर सॉफ्ट, आई मीन दैट इज लेस देन हाफ अ किलो, आधे किलो से भी कम. राइट. इट्स रियली इट इज इट रियली, बेन ने बोला. ओ यस, आंसर द मॉन्स्टर, आई एम सो स्मॉल बट आई एम नॉट स्टूपिड. मैं स्टूपिड नहीं हूँ. This gave Ben such a great idea that ginned all the night. दिमाग में चलता रहा. Even in his sleep, he was still grinning the next day at school as Mr. Giggle began his lesson. वही सब कुछ होने लगा. Ben Boggle barked the teacher. What is 9 times 8? 9 times 8 means 9 की multiply 8 में क्या होगा? He smirked, sure that Ben would know the answer. Might be Ben को आंसर पता होगा. 72. 9 8 to 72, answered Ben very confidently. He answered. Mr. Giggle could not believe his ear. Oh no, you know the answer? He said shakily. He asked Ben problem after the problem. पूछने लगा सब. Ben calmly answered each and every question. हर एक question का answer दिया उसने. And Mr. Giggle was totally amazed. He looked too quiet and impressed. That well done, Ben. बहुत अच्छा कर रहे हो. He said, looking pleased. What an astonishing improvement. Astonishing means surprising, right? Luckily, no one but Ben had heard the tiny voice which is whispering the answers, and Ben smiled to himself और खुद से हंसने लगा. Mathematics is lot easier when you have a monster in your pocket. अगर आपके शेप में monster हो तो mathematics is very easier. It has been adapted from the bed monster secret से एक extract लिया हुआ है. Right, moving on to this word meaning cold sweat means ठंडे पसीने आना. Stretching root of being scared. Gurgle is of course made a hollow bubbling sound, आवाजें निकालना, right, like made by water running out of a bottle. जैसे बॉटल के अंदर आप पानी भर रहे हैं और वो आवाज आ रही है. Slimy tentacle means oily, slippery, wet, long, thin, movable tentacles हैं, part of a body of animal. Smirk means smiled in a very irritating way में smile करना so that you can make a very fun of someone, right? Snort means it's a loud sound which is made up of sudden forcing of breath through the nose. मतलब kind of आप नाक से कोई आवाज निकाल रहे हैं. Spot means notice करना. Wail means बहुत ही ज्यादा दर्द में. That is cried with pain, shook, right? Moving on to this practice time. First, we'll be competing with the MCQs. Ben के father likes to go for fishing, right? The tiny voice whispering the answers could be heard only by Ben. Right? When 15 ounces is of course less than a kilo, right? And when ने trap बनाया किसके साथ? 2 chocolate cookies placed in the net, right? Ben का surname was क्या था? Ben का surname was, I think it was Boggle. Moving on to this fill in the blanks. Ben Boggle lay awake in a cold sweat. उनको बहुत ही ज्यादा ठंडे पसीने आते थे because of danger, right? Ben had never dashed. Ben had never dared to look under his bed. Right? He was too terrified जो वो देख रहे थे. And Ben had decided to build a trap for the monster, right? And Mr. Gizzle was amazed that how Ben has answered all the questions. Moving on to this true and false. Ben had never dared to look under his bed. Yes, this is true. Mr. Gizzle liked students to be awoke in the class. Yes, right. Mr. Gizzle could not get furious with Ben every day. This is false. He was getting furious with every day with this Ben. Ben room was quiet as mouse too, right? And Mr. Giggle was not amazed. This is absolutely false, right? Moving on to this question answers. Please complete all these question answers at your own. And I hope you all understood this chapter. It was all about a fantasy, or you can say it's a fiction story where a child is just imagining a ghost under his bed. Just go through this chapter. It's very easy, very funny, and keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thank you.